I'm just really excited कि हम अहमदाबाद जैसे शहर में आए हैं मेरू कैब्स की entire service को launch करने, क्योंकि Ahmedabad is a city, according to me, and everybody knows that, that it's one that is seeing exponential progress, it's seeing transformational growth, it's seeing so much going on. कई बार from seeing Ahmedabad from I'm talking about 12 years ago या 15 साल पहले जब मैं यहाँ आई थी, तो हमेशा from seeing little lanes to now seeing such wide roads and such big highways to skyscrapers. It's amazing to see so much growth, and yes, we all know that by the Times of India survey, it was voted as the #1 city of the nation, and of course bringing the #1 cab service of the nation together. It's, I think, according to me, one of the best launches, one of the best mergers, one of the best matches that we can say that are made in heaven, and that's why we're here to launch it in a beautiful city like Ahmedabad. And now, to answer your question about the ICE service, about the technology, you can ask me the question again. Yes, first of all, I do agree. The kind of progress, the growth Ahmedabad city has been showing, Meru Cab is definitely going to change the way. It is going to contribute to the infrastructure of the city. Sure. Firstly, what's amazing about Meru Cabs is उन्होंने एक नई technology launch की, of course, which is the app by itself. And one of the features of the app is the ICE feature. Speaking of the app first, जब मैं खुद एक iPhone user हूँ, this app is absolutely compatible and friendly with the Android, with the iPhone. You can just download it. It's absolutely free. और आप अपना जिससे टैक्सी, आप अपनी टैक्सी बुक कर सकते हैं, अपनी मेरू कैब बुक कर सकते हैं with just the press of 3 buttons. You can literally just press 3 buttons. That's easier than dialing a number, and you have a cab at your doorstep. और अगर पहुंची नहीं है, we all of us as a nation, we are a very impatient nation, और हमेशा हमें लगता है कि कितनी देर में आने वाली है टैक्सी का कैब, कितनी देर में पहुंचने वाली है. So you're always you get minute to minute updates. You know exactly कि आपकी मेरू कैब कहाँ पहुंची है. You know exactly कि आपकी मेरू कैब कितनी दूर है. How much time. एक बार आप बैठ ही जाएं. I'm always running late when I'm going to the airport. I trust Meru Cab more than I trust my own car and driver, because they give me minute-to-minute detail on the new app. So it's absolutely amazing to use the app. I personally use the app, and what makes it really special to travel by a Meru Cab is not just the reliability, it's not just the comfort, it's not just the safety that you get with it. More than that, it's what it provides you with. Especially being a woman, you would agree too. And I'm sure there are a lot of women in the audience who भी मेरी इस बात से सहमत होंगे कि safety is of utmost importance, and that's why you have in the app you have a feature called the ICE feature, which is right at the top, and you can just ICE is ICE, which stands for in case of emergency. So all you need to do is press it, and literally within 30 seconds to a minute, people who are going to be next to you, people who you fed numbers of, they'll know, okay, you're in trouble. They'll know about by the GPS service that aap kahan hai, and they'll be at your rescue. And you don't only have to use the ICE service in the app to book a cab. You can also use the ICE service. You could be walking on the road and you'd be like, oh God, I'm not feeling safe here. You just press it, and there'll be somebody there to rescue you. By that somebody, I mean the 2 people who you fed as the numbers. In my ICE service, it's my mother and father. And fortunately, they are literally 30 minutes away from me wherever I am, thanks to the ICE service. And now I don't even have to call them; they know exactly where I am. And yes, I just feel that Meru Cabs is a service that is #1 for a certain reason. It's #1 because it's best in the business. It's #1 because it makes its customers like me, now like you, now like all of you. It's going to make you feel very, very comfortable. It's going to make you feel extremely it's something you can rely on day in and day out. And the most important thing is it's going to make everyone feel safe. And the best part about Meru Cabs is they never sleep. So, you know what? They'll always be there for you. Thank you. God is going to experience that very soon. So I think without further ado, let me just welcome, the managing director and founder of Meru Cab Services here in the city of Ahmedabad. 5, 4, 3, 2, 1.
Wow. Very stylish, very gorgeous, as gorgeous as Neha. Meru Cab is here with us. We all are witnessing the launch road because it is going to change the way we commute. Show what this है. Congratulations to you. Excuse me. Yes, ma'am. Yes. Okay. Yes. She's going to sit in there. Yeah, one look here. Alright, thank you very much. Let me tell you, we have special arrangements for this particular launch to make it even more special. Yes. We have car ready, आपका पिक्चर क्लिक कर पाएंगे और उसके बाद हम फिर से नीचे वापस आएंगे जहाँ पे आप अगर इलेक्ट्रॉनिक बाइक लेने हैं आपको नीरज जी के साथ गुजार जी के साथ आप यहाँ पे वापस आ सकेंगे उससे बातें कर पाएंगे इंटरव्यू वन ऑन वन ले पाएंगे
कैब सर्विस लॉन्च किया है। आप खुद कभी टैक्सी में सफर करती है, कैसा रहता है? जी हाँ, मैं एक्चुअली आपको सच बताऊं, अगर आपने ये सवाल जब मेरू कैब सर्विस लॉन्च नहीं हुई थी मुंबई में, अगर मुझसे पूछा होता तो इसका जवाब होता ना। पर जब से मेरू कैब सर्विस लॉन्च हुई है मुंबई में, तब से मैं मेरू कैब की सर्विस यूज़ कर रही हूँ। और कई बार, जैसे मैंने स्टेज पर भी कहा था कि कई बार हम ऐसे ब्रांड्स एंडोर्स करते हैं जो हम खुद इस्तेमाल नहीं करते, बट मेरू कैब इज अ सर्विस दैट आई हैव बीन यूजिंग इवन लॉन्गर देन माई एसोसिएशन ऑन स्टेज विद देम। सो गाड़ी में बैठना या किसी मेरू कैब में बैठना, या फिर हाउ डू आई कॉल द नंबर, आई हैव द नंबर ऑन स्पीड डायल, हाउ डू आई यूज द सर्विसेज, इनकी ऐप क्या है, कहाँ मैं यूज कर सकती हूँ, कैसे, कितने रिलायबल हैं। आई हैव बीन यूजिंग इट फॉर मैनी ईयर्स नाउ, एंड आई हैव टू से कि हम रोज बहुत फ्लाइट्स पकड़ते हैं, हर दूसरे दिन हमें एयरपोर्ट जाना होता है। आई हैव मिस्ड माई फ्लाइट व्हेन माई ड्राइवर एंड माई ओन कार इज देयर, बट आई हैव नेवर मिस्ड माई फ्लाइट जब मैं मेरू कैब की सर्विस यूज करती हूँ। मुझे बात कीजिए आपकी फिल्मों की, क्या नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स हैं? I have a movie coming out with Karan Johar is produced. It's called Ungli. I have another comedy film with Vaman Irani and Veer Das. It's called Santa Banta. And I'm starting another film next week. The shooting is starting. It's called 21 तोपों की सलामी. एक और it's very my kind of film. Satire है, अपने देश के बारे में बहुत कुछ बताया गया है उस फिल्म में, कॉमेडी बहुत है, एंड yes, it's very different. अगर आप देखेंगे, it's almost like फंस गए रहे ओबामा के बाद मुझे एक ऐसी स्क्रिप्ट मिली है जो मैं पढ़ते पढ़ते मुझे इतनी हंसी आई that I was like इंटरवल टाइम पे मैंने डायरेक्टर को फोन किया और कहा कि I'm definitely doing this film. अच्छा नेहा जी, नवरात्रि आ रही है, काफी स्टार्स होते हैं जो नवरात्रि के दौरान अहमदाबाद आते हैं, आपका कोई प्लानिंग है? कैसा कोई शौक है आपको होटल में जाने का? वेल, शौक तो है। आज हमने मेरू कैब जब लॉन्च हुआ था तब भी थोड़ा बहुत हमने डांस तो कर ही लिया था, बट आई थिंक द बिगर न्यूज़, बिगर देन नवरात्रि इज डेफिनेटली द लॉन्च ऑफ मेरू कैब्स। मैं बस ये कहूँगी कि जब आप इधर उधर गरबा या डांडिया के लिए कहीं पे भी जाएं तो ज़रूर मेरू कैब की सर्विस यूज़ करें, बिकॉज अहमदाबाद इज अ ग्रेट सिटी, मेरू कैब इज अ ग्रेट सर्विस, एंड नवरात्रि इज अ वंडरफुल फेस्टिवल, सो एंजॉय ऑल थ्री ऑफ देम टुगेदर. थैंक यू.